Welcome back, students. In the previous videos we were discussing about addition, and in today's video we will be starting the topic of subtraction. We will start by doing the simple subtraction of numbers that are going to be up till 4 to 5 digit numbers. Okay, so let's discuss the simple rule of subtraction ताकि हम इसको और ज़्यादा नंबर्स को easily subtract कर सकें. ठीक है, let's read the example together. Sarah bought 23 biscuits. सारा के पास कितने बिस्किट्स थे? 23 and she ate 11 of them. उनमें से 11 biscuits she already ate. How many does she have left? उसके पास कितने बाकी बिस्किट्स रह जाते हैं? So the thing about simple subtraction is आप या तो easily उस नंबर को उतने नंबर्स को ड्रॉ करके और उसको कट डाउन करके आप सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. लेकिन देयर इज़ अनदर वे जिसमें हम उन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं ताकि हम उसका आंसर फाइंड कर सकें. हम इन दोनों मेथड्स को देखेंगे ताकि अगर हमारे पास छोटे नंबर्स आते हैं तो हम इजीली उन नंबर्स को ड्रॉ करके कट डाउन करके आंसर लिख सकें. एंड इफ़ वी गेट द बिगर नंबर्स तो हम उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट डाउन कर सकें और उनका आंसर फाइंड कर सकें. ठीक है, तो इस केस में दे हैव ड्रॉन 23 बिस्किट्स ओवर हियर. उसमें से 11 बिस्किट्स को उन्होंने क्रॉस कर दिया. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now we are going to count how many are left. It's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So that means कितने biscuits are left? 12 biscuits are left. ठीक है, now we are going to use another method in which we are going to place these numbers in the place value chart. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास है ये जी टेंस एंड वंस का. इसमें हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ जी 23 और 11. ऐसे ही है, 23 दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किया. तो 2 टेंस है हमारे पास और 3 वंस हैं, राइट. इसी तरह हम देखें यहाँ पर तो हमने इसमें से क्या माइनस करना है? 11 नंबर. तो हम 1 टेंस माइनस कर देंगे इसमें से. ठीक है, 1 टेंस को माइनस कर देंगे और इसमें से 1 वंस को माइनस कर देंगे. तो जो रिमेनिंग हमारे पास रहता है वो क्या होगा? 10 और 2. दैट मीन्स 10 टेंस हमारे पास हैं और ये हमारे पास वंस कितने हैं? 2 है. तो हमारा आंसर वही आता है सेम, और वो क्या है? नंबर 12. alright, that is the difference between the number 23 and the number 11. Let's move on to the next example. So in this example we are going to use 3-digit value and the 2-digit value to solve this question. Asad has 125 points. ठीक है, and he gave away 13 points. असद के पास 125 points थे लेकिन उनमें से 13 points he gave it away. How many coins are left? उसके पास कितने coins बाकी रह जाते हैं? तो हम इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको नंबर्स को फाइंड करना. सबसे पहले हंड्रेड्स की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज़ 1. Then comes the tens value, that is 2, and then comes the ones value, that is 5. इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे एंड दैट इज 13. इधर आएगा वंस की जगह 3 एंड टेंस की जगह 1. एंड यू कैन नोटिस दैट दिस इज अ 2-digit नंबर. इसमें कोई थर्ड डिजिट नहीं है तो हम उसको क्या अज्यूम करेंगे? 0. Remember this, that whenever you put a 0 on the left side of a number, कौन सी साइड पे हम पुट करते हैं? लेफ्ट साइड पर अगर नंबर पुट करते हैं इट डज हैव नो वैल्यू. उसकी क्या होती है? कोई वैल्यू नहीं होती उस 0 की. But why do we put it over here? We do it because we want to you know understand how can we add two different numbers that are of two different digits into each other.
या तो हम उसे ऐड कर सकते हैं कैसे, या उनको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं. तो लेट्स सी. एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3. तो इसको हम 1 2 3 4 5 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें से 3 लाइंस कट करते हैं और जो रिमेनिंग है वो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज 2. सो इन दिस केस वी हैव 2 एंड वी हैव टू टेक आउट 1. तो इधर क्या आंसर आएगा 1. एंड द लास्ट 100 में, 100 की वैल्यू में जब 1 को हम 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज गोइंग टू बी 1, because whatever we add or subtract in 0 वो आंसर हमारा सेम आता है. so in this case असद के पास कितने कॉइन्स लेफ्ट थे? असद has 112 coins left. ठीक है. This is how we're gonna write the answer. Let's move on to the next example, and that is subtracting 4-digit numbers from the 4-digit numbers. A worker packed 2,317 shirts. If he has to pack 7,348 shirts in total, how many shirts are still left to pack? कह रहे हैं एक वर्कर है, उसने कितनी शर्ट्स पैक की हैं? इतनी शर्ट्स पैक की हैं, लेकिन अगर उसे इतनी 7,348 शर्ट्स पैक करनी पड़ती तो अभी उसके पास कितनी और शर्ट्स बाकी हैं जो उसे अभी पैक करनी है. सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर सब्ट्रैक्शन. और हम क्या करेंगे, हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करेंगे. और रिमेंबर, सबसे पहला रूल कि व्हेनेवर वी राइट समथिंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, हम क्या करते हैं, हम बिगर नंबर सबसे पहले लिखते हैं. तो इस केस में हमारे पास बिगर नंबर क्या है? 7001. तो हम इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं. 7 3 4 8. इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर को पुट करेंगे, वो आ जाएगा 2 3 1 7. ठीक है. और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि कितनी शर्ट्स बाकी रह गई हैं जिनको हमने पैक करना है. ठीक है. तो लेट्स काउंट फ्रॉम द वंस. तो 8 में से हम 7 निकाल दें अगर, तो क्या नंबर बचता है? इट्स नंबर 1. इट्स वेरी इजी, राइट? अच्छा जी, 4 में से वी हैव टू टेक आउट 1. 4 माइनस 1 इज व्हाट? इट्स एक्चुअली 3. इसी तरह 3 माइनस 3 मीन्स द नंबर 0. जब आप 3 को 3 में से माइनस कर देते हो, द नंबर बिकम्स 0. Last we have 7 and we have to subtract 2 from it. तो हम इधर 7 lines draw कर लेते हैं. If it's difficult for you to subtract 1 2 3 4 5 6 7 and इसमें से 2 lines हम cut कर देते हैं. We have how many left? 1 2 3 4 5. We have 5 left. So हम इधर लिखेंगे 5. So how many shirts does the worker have to pack? He has to pack 5,031 shirts. ठीक है. So this is how you can do the simple subtraction, and see you guys in the next videos.